knowledge elites. Headphones are recommended for better experience. A very good morning to all of you. My name is Himanshu Goyal and today I am presenting you the next part of this video. In last video we have covered that male and female gametes in flowering plants, how they are produced, the events and the structures following. As both type of gametes are non-motile, they have to bond together for fertilization to occur. Now, how is this achieved? To know, let's continue watching. Today we are covering part 2 of the remaining part which is left over in first video, the pollination and double fertilization. And in third part, as you know, post-fertilization structure events and endosperm, embryo and seed, and apomixis and polyembryo. We'll cover this part in next video. Now, what is pollination? Can you guys think of that? Pollination क्या है? परागण क्या है? Pollination is the mechanism to achieve the objective of transfer of shedded pollen grains from anther to stigma. As you can see in the diagram, pollination is happening between two flowers. Pollen grains are carried away with a bee on the stigma of another flower. That causes fertilization and transfer of pollen grains from anther to stigma. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination, including external agents. Now, how many kinds of pollination are there? Kinds of pollination depending on the source of pollen. Pollination can be divided into three parts. First is autogamy, second is geitonogamy, third is xenogamy. Now we are covering all of these three part by part. First is autogamy, transfer of pollen from anther to stigma of same flower. Complete autogamy is rare because it requires synchrony between pollens and stigma, and they both should be near to each other. Autogamy simply means pollen grains anther to stigma of same flower. एक ही फूल है, उसी के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं उसी फ्लावर के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. एग्जांपल्स आर वायला, कॉमन पैंसी जिसे हम कहते हैं, ऑक्सैलिस एंड कैमेलिना. ओके, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. फर्स्ट इज कैस्मोगैमस. एज यू कैन सी दैट कैस्मोगैमस flowers with exposed anther and stigma, and second is clistogamous, flowers which don't open at all. Flowers with exposed anther and stigma means it is an open flower, that is chasmogamous. Clistogamous is a closed flower. In clistogamous flowers, the anther and stigma lies close to each other, which ensures autogamy to some extent. When anthers dehisce, the pollen falls on stigma, hence pollination occurs, which ensures seed formation in absence of pollinators. Hence guys, clistogamous flowers have an advantage. That advantage is that ensures seed formation in absence of pollinators. Now coming about the diagrams, you can see the self-pollinating cross-pollination, both of these. Autogamy, in one flower, anther to stigma. In geitonogamy, it is pollen transfer between two flowers of same plant. Pollen grains from one flower to another flower's stigma, but the plant is same. And the third is xenogamy. Xenogamy includes pollen transfer between flowers of different plant individuals and varieties. Xenogamy means pollen grains from a flower to another flower of another plant. Now coming about the second type,
that is geitonogamy. It says that transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of same plant. Functionally, cross-pollination involving pollinators, and genetically it is similar to autogamy because pollens are from same plant. Third part is xenogamy. Transfer of pollen grains from anther to stigma of a same plant. This is the only type of pollination which brings genetically different pollens to stigma. So basically, if we talk about all of three, the geitonogamy and autogamy both are self-pollinating techniques, and xenogamy is the only true cross-pollinating technique. Then coming to our next part, that is agents of pollination. What are agents of pollination? There are two types of agents, biotic agents and abiotic agents. Abiotic agents involves wind pollination and water pollination, as well as biotic agents involves animals like mammals, reptiles, birds and insects, as you can see in this flowchart. Agents of pollination. Majority of plants use biotic agents for pollination. Around you, if you're finding some flowers, then most of them are using biotic agents. Abiotic pollination probability is low. Hence, to compensate this uncertainties and associated loss of pollen grains, flowers produce enormous amount of pollens as compared to number of ovules available for pollination. Pollination by wind. These plants' pollen grains are lightweight and non-sticky so that they can be transported in wind. Pollination by wind, they usually have well exposed stamens for easy dispersal. वो जो है उनके स्टेमन्स जो है वो काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं. लार्ज फेदरी स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है लार्ज होता है और फेदरी होता है जिससे कि वो पोलन्स को कैच कर सके. दे यूजुअली हैव सिंगल ओव्यूल in each ovary, and if flower are small then numerous flowers are packed in inflorescence. अगर सिंगल एक तो पहला पॉइंट ये सिंगल ओव्यूल होता है सिंगल ओवरी में, ईच ओवरी के अंदर, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर फ्लावर स्मॉल होते हैं तो वो बंचेस में आते हैं जिससे कि इजीली विजिबल हो, इंसेक्ट्स को या इजीली जो है वो कैच कर सके पोलन्स को. इसके एग्जांपल्स हैं कॉर्न कॉब एंड ग्रासेस. कॉर्न कॉब आप जानते हैं, आपने भुट्टा खाया होगा, उसमें बाल बाल से निकलते हैं ना, दैट बाल बाल से इज दिस फेदरी स्टिग्मा. ओके. एंड ग्रासेस आपने देखा होगा, ग्रासेस के अंदर काफ़ी सारी ग्रासेस होती हैं, ऊपर की तरफ एक कोन सा निकला होता है और काफ़ी फेदरी सा उसका टिप स्ट्रक्चर होता है. Now coming to next, pollination by water. Limited to 30 genera of monocotyledons and common in lower plant group like algae, bryophyte and pteridophytes. Their distribution is limited because they need water to transfer the male gametes for fertilization. इसका now coming to pollination by water, ये मोनोकॉटिलिडन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है कॉमनली. इसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसका लिमिटेड क्यों होता है? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन्स टू स्टिग्मा. फॉर एग्जाम्पल वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिलिया, फ्रेश वाटर, दीज आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, एंड जोस्टेरा इज मराइन सी ग्रास जिसके अंदर ये पाया जाता है. नाउ इन वेल्सेनेरिया, फीमेल फ्लावर कम टू सरफेस एंड मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड ऑन टू वाटर एंड कैरीड विद वाटर करंट्स टू स्टिग्मा. इसके वेलिसनेरिया के अंदर फ्लावर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, वहाँ से मेल गैमेट्स जो है वो वाटर के ऊपर रिलीज कर दी जाते हैं और वो वाटर करंट्स के साथ स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं. In seagrasses, female flowers submerged in water and
pollens are released in water. मीन्स सी ग्रासेस के अंदर फूल भी पानी के अंदर ही होता है और पोलन ग्रेन्स भी पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं और वो वहीं ट्रांसपोर्ट भी होते हैं स्टिग्मा तक. फॉर दैट पोलन्स आर स्पेशली अडेप्टेड. अब ऐसे में पोलन ग्रेन्स को कुछ अडेप्टेशंस चाहिए होती हैं जो कि होती भी हैं उसमें, जैसे कि वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं एंड प्रोटेक्टेड होते हैं गीले होने से by a mucilaginous covering. Not in all aquatic plants pollination is happened through water, like in water hyacinth and water lily. Now the picture is showing you the water hyacinth plant. Look how beautiful are the flowers, but there is a separate purpose for that. सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन अंडर वाटर या ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर नहीं होता है. वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली के अंदर फ्लावर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें विंड और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कराना होता है. बोथ विंड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल एंड डोंट प्रोड्यूस नेक्टर. व्हाई? बिकॉज दे डोंट नीड any kind of biotic factors or biotic agents to do their pollination. So it is kind of a reward system. We are going to cover it in coming slides. Pollination by animals. Flowering plants use range of animals as pollinating agents like bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moth, birds and bats too. Some of them, the pictures of them are given in given this slide. Bees, bat, third is hummingbird and fourth is butterfly. Larger animals like lemur, the primates, or arboreal rodents, tree-dwelling rodents, or even reptiles, gecko, lizards, garden lizards, these can also pollinate a flower. Flowers of animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animals. Like insects, pollinated flowers are large, colorful, fragrant, secret fold odor for flies, and rich in nectar. Basically, bees and flies are the dominating biotic agents. Now, when small number of flowers clustered into an inflorescence to make them conspicuous, means easily noticed, to sustain visits for insects, plants, they provide rewards like nectar, pollen grains and safe places to lay egg. For example, Amorphophallus, the tallest flower of world. It has a height of 6 feet, means more than me. I am 5'11" and it is a 6 feet. So the second example is moth and yucca plant. Moth deposits its egg in the locule of ovary and flowers get pollinated. The larvae come out when seed starts developing. Moth and yucca plant का आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है. ये इन दोनों की लाइफ साइकिल आपस में अधूरी होती है एक दूसरे के बिना. Now, outbreeding devices. Majority of plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to get into contact with same flower of stigma, and this is called as self-pollination. Continuous self-pollination results in inbreeding depressions. So to avoid self-pollination, flowers have developed some devices or some ways to avoid self-pollination. First is pollen release and stigma receptivity not synchronized. Means sometimes pollens are released first and stigma is not ready. Sometimes stigma is ready but pollens are released later. The second point is the anther and stigma are placed at different position
जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर जो स्टिग्मा है वो अपर पोजीशन पे प्लेस्ड है और एंथर्स जो हैं वो थोड़े लोअर लेवल पे हैं, तो पोजीशन में डिफरेंस हो गया। द थर्ड पार्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी is a genetic mechanism to avoid self-pollination by inhibiting growth of the pollen tubes for pollen from the same flower or plant. Self incompatibility क्या होती है? एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन आ भी जाते हैं तो भी वो स्टिग्मा उस पोलन ग्रेन को ग्रो करने से रोक देगी या उसकी पोलन ट्यूब को ग्रो होने से रोक देगी, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो सके। नाउ फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट दैट आर कॉल्ड एज मोनोशियस प्लांट्स, जैसे कि कैस्टर मेज। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गेटेनोगैमी। ऑटोगैमी को तो वो प्रिवेंट कर जाता है, बट गेटेनोगैमी आपको पता ही है, अभी अपन प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा है व्हाट इज गेटेनोगैमी, उसको ये अवॉइड नहीं कर पाता है। इन पपाया मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर जो पपाया जो सेंटर में है वो पपाया फीमेल प्लांट है, एंड जो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर है वो पपाया मेल प्लांट है। तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट मीन्स डायोसी। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी। इसके अंदर आप 100%, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक फ्लावर के या एक जेनेटिक्स के पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल हैं वो साथ में नहीं आ पाएंगे। दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन डिफर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen, to the stigma. So often pollens are of wrong type from different species or same species but self-incompatible. They land on stigma. Pistil has ability to recognize pollen, whether it's compatible or incompatible. If it's right, pistil accepts pollen and promotes post-pollination events lead to fertilization. If it's wrong, the pistil rejects the pollen germination and preventing pollen tube growth in style. The ability to recognize the pollen acceptance and rejection by continuous dialogue between pollen and pistil through chemical components. क्या होता है इसके अंदर? एक दिन जो है पोलन आया, बोलता है नॉक नॉक, कौन है? अंदर से आवाज आई, कौन है भाई, कौन है? बाहर पोलन ने बोला मैं पोलन हूँ। तो अब स्टिग्मा बोली कि अपना सीक्रेट कोड बताओ। तो अब वो सीक्रेट कोड कैसे बताए? वो सीक्रेट कोड बताता है वो ये केमिकल कंपोनेंट से। दोनों के बीच में डायलॉग जो हो रहा है ये तो हम मुंह से बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो डायलॉग होता है वो केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। तो ये जो है ये बहुत बढ़िया एबिलिटी है पिस्टल की, जिससे कि वो जान सके कि जो बाहर जो उसके स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स गिरे हैं वो कंपैटिबल हैं या एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं है। Now coming to next, when it's compatible pollen, then the pollen germination starts through germ pore. The content of pollen grain move into pollen tube and pollen tube grows through the tissue of stigma and style and reaches ovary. If pollen grain shed at 2-cell stage, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था 2-cell stage and 3-cell stage in microsporogenesis, if you remember, उसके अंदर था if pollen grain shed at 2-cell stage, then generative cells divide into 2 male gametes during the growth of pollen tubes in stigma. If pollen grain shed at 3-cell stage, then 2 male gametes travel through the pollen tube and to ovary, then ovule to synergized cell through filiform apparatus. Filiform apparatus का हमने काम देखा था, वो जो है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को इनसाइड दी ओव्यूल।
All these events from pollen deposition to pollen tube ovule ovule is called as pollen pistil interactions. Now you are clear about that. If you can see the diagram, it clearly shows the pollen pistil interactions. The first pollen grain come to the stigma, then he says knock knock, then stigma says who is there, then the chemical exchange of dialogues happen between pistil and the pollen grain. Then it allows, okay, you are the pollen of right type, please come in. Then the pollen tube starts developing and it goes all through to the style and penetrates the ovary, then to ovule through synergid cells and filiform apparatus. So it is complete. Now we are coming to next part, which is relating to that is artificial hybridization. This knowledge can help plant breeders. जो knowledge अभी हमने gain की है, this knowledge can help plant breeders to manipulate this interaction to create hybrids. Breeders are interested in crossing different species and genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties. In artificial hybridization techniques, it's important to use desired pollens for pollination and protect stigma from unwanted pollens. This can be achieved by emasculation and bagging techniques. Now you are wondering, what is this emasculation and bagging techniques? These are so heavy words, but don't get hesitated or feared. I am going to explain these in further. If female parent bears bisexual flowers, then removal of anther is necessary to avoid self-pollination or to avoid the inbreeding depressions. Before dehiscence, by using a pair of forceps is done this removal of the anthers. This process is called as emasculation. Means when the flower is bisexual, then we have to remove the anther to avoid self-pollination or the inbreeding depression. So emasculation is done. The emasculated flower is then covered with bag or butter paper to prevent unwanted pollen is called as bagging. Means if the bisexual flower is now a unisexual flower, when you have emasculated it, then we have to cover it with some polythene or butter paper kind of thing to protect it from the unwanted pollen grains. So coming to next, then pollens are taken from anther to male parent, dusted on the stigma, then the flowers are rebagged and fruits are allowed to develop. अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो हमने इमेस्कुलेटेड फ्लावर था, उसकी स्टिग्मा को हमने कवर कर दिया, बैगिंग कर दी उसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक डिजायर्ड जो करेक्टर वाला प्लांट है उसके एंथर से उसके पोलन्स उठाए, उसके पोलन्स को डस्ट किया हमने स्टिग्मा पे, जो फीमेल पेरेंट हमारी थी जिसको हमने बैक किया हुआ था उसके ऊपर, और उसके बाद फिर उसे रीबैक कर दिया जिससे कि फ्रूट्स आराम से डेवलप हो पाए और कोई फर्दर पोलन ग्रेन उस पर ना आ पाए या कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए. इफ फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस then no need of emasculation and flowers can be bagged in bud stage. अगर आपको पता है, पहले से ही पता है, जैसे कि पपाया के अंदर हमारे पास एक फीमेल प्लांट होता है अलग से, हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो कोई एंथर्स या पोलन ग्रेन्स का कोई सवाल ही नहीं है, तो ऐसे में हम लोग उसमें कोई इमेस्कुलेशन नहीं करेंगे, वी जस्ट उसको जो है बड स्टेज के अंदर बैग कर देंगे जिससे जो है वो कोई और पोलन ग्रेन उस पर आके ना गिरे, जो हमें डिजायर्ड है वो करे. तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज artificial hybridization. Now coming to next, we have double fertilization. Now we have completed the whole process, we are coming to the fertilization part. What is double fertilization? After reaching ovule, pollen tubes release two male gametes into cytoplasm of synergids. One gamete moves towards egg cell, fuses with its nucleus and completing syngamy.
that forms zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus, that is called as pen. The pen is given in 3n in between the diagram. You can see in that it is called as triple fusion. 3 फ्यूज हो रहे हैं इसलिए हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. Since two types of fusions, means syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, that phenomenon is termed as double fertilization. The triple fusion in central cell becomes primary endosperm cell, which is PEC. You can see in that diagram, and develops into endosperm while zygote develops into embryo. What is the purpose of endosperm? Can you guess? It provides nutrition to developing embryo. Now, last video has some questions and I have to answer that to you. I have come with the answers. First question says, how tapetal cells could become binucleate? Then tapetal cells undergo endomitosis. Now you are wondering, what is this endomitosis? Endomitosis is simply the division between the nucleus of the cell without involving cytokinesis. Means the cell is not dividing, only the nucleus is dividing. Then the tapetal cells should become binucleate. Thanks a lot, guys. Have a nice day and have a knowledgeable day ahead. Don't forget to like, share and subscribe my channel, Knowledge Elites.